Yeah, you are live, sir. Okay. So, good afternoon, everyone. Today we are starting the fifth unit, that is environmental pollution. So, I will try to mostly, talk in English. But if you have any problem, you can write in the chat box that if you have not understood anything. So that would be good if I will be able to see the chat. If you're able to not understand anything. But yeah, beach I can use both languages. It's not a problem for me. So because this is our first class, so I'm just very briefly telling you that you have an access to chat, and if in case you don't understand anything, you can easily write a message to me. I'll be able to see what you have written as a message. So that is fine. Fine. So before we discuss, we have to understand environmental pollution. So before we start environmental pollution, so let's see how we actually define pollution as. So if you look at the screen, you can easily see that we basically use the word pollution normally in our daily life, but sometimes we don't have the right usage of words to actually define it. This is something which you should also understand, that if you talk about pollution, you have to see that it talks about alteration in our immediate surrounding technically. So what is our immediate surrounding, which is air, water, soil, and the food that we eat. Because obviously we are exposed to the air, we are exposed to the water because we consume water, and obviously soil, which is around us, because even we grow food in that particular soil. And whatever we consume, if that food is contaminated, and these alteration can actually help threaten our health, they will threaten our survival ability, they will affect our activities, not only ours but also other living organisms. So that is how you can collectively define pollution, because it's not a positive change that is happening around us, right? And this is one of the most common word that you hear, technically speaking. Why, you understand that it's why it is one of the most common word, because even you talk about Delhi, you are studying in Delhi University, and Delhi में जो भी रहते हैं उनको पता है what is pollution, because we are very familiar with that. Because what happens that in this city we can see that uh, it is always in the news for pollution, right? Delhi is something that you are familiar with, and you know that it is always in the news when you talk about pollution. So obviously, the most important thing for us to remember is that it's a we are living in a world where things are basically deteriorating on a daily basis, because we always talk about it, that there are a lot of changes that are happening and it is affecting our health, especially when you're living in a mega city like Delhi. You know that you are exposed to many of these pollutants on a regular basis. So obviously, it is something that we are aware of, but we should just discuss in detail that what all types of pollution are there and how it is impacting our health, and which form of pollution is more dangerous than other form of pollution, right? Obviously, all forms of pollution has some negative impact, but what is more dangerous, what is less, and all of those things, we'll cover up all of those things while we discuss. And I will also try to give some examples as we, go move ahead in this particular unit. So this is our first class, and you know that the first 3 days that we meet, we will be discussing this unit, the pollution part, and then later on we will move to the next two units, that is unit 6 and unit 7. So I'm starting with pollution. And if you look at your syllabus of environmental sciences, you know that we have to discuss these 7 forms of pollution. So that is what you see. We have to discuss about air pollution, we have to discuss about water pollution, and in water pollution you will have 3 types, because we will refer to fresh water, we will talk about thermal, we will also talk about noise pollution, and then we will talk about soil and nuclear pollution. So today I'm trying to cover up air pollution and fresh water pollution. That is the topic that I'll discuss today. And in the next 2 days, when we will discuss pollution, we will talk about the other topics like marine, thermal, and noise. And then later on, last, we will discuss about soil, nuclear, and even one more part of this unit is there. On that day, we can discuss the waste management part as well. So we have pollution as well as waste management in this particular unit, and that is what we'll cover in the next 2 days and the next 2 classes after this. So starting with the first one, that is air pollution. So before we start with air pollution, you can understand that uh, see, whenever you discuss a topic which is related to pollution, so you have to cover up a few things, right? What kind of pollution
what kind of pollutants are there for this particular pollution. Like we will be discussing about various types of pollutant, how it affects, what are the sources of these pollutants, how it affects us. So these are the three important points. Then we also have to discuss how like you can manage this pollution, like how can you control air pollution. And obviously the last is one of the most important part, to discuss a case study, because you can understand that since it's a very practical topic, because as I was just telling you that air pollution is something that we are always familiar with. We always hear about this in the news, especially because Delhi has a situation where you definitely know that the air quality index of the city is very poor all the time. So we always talk about it. If you open your newspaper or anything, if you go read it, you will hear that India has one of the most polluted cities in the world we have in our country. That अभी लास्ट टाइम जब सर्वे हुआ था उसमें पता चला था कि जो 20 मेजर सिटीज जो पोल्यूटेड है हमारे कंट्री में, सॉरी वर्ल्ड में, उसमें 17 सिटी वेयर फ्रॉम इंडिया इन द टॉप 20. So you can understand कि how bad it is. So going by the list, you can understand that it is definitely not a good thing for our country. That like level of pollution in India is very high. We all know that. And before we start and discuss all kinds of pollutant, you should understand that air pollution is the most prominent killer in India. When you talk about anybody dying because of pollution-related problems, about 2 million people in India die every year just because of air pollution. So you can understand that people, it is estimated that we have about 2.6 or 2.7 million people who are being affected because of pollution of different sorts of, right? Usme jo majority of people that are being affected is by air pollution, where it affects 2 million people. So you can understand that of a total of 2.6 or 2.7 million that is estimated, about 2 million of that is being affected just because of air pollution. Because obviously you can understand that if air is polluted, you can't really avoid, because obviously we are living in the city and you have to breathe. And obviously if you have a poor air quality, you will have to deal with that only. That is something that you always cannot avoid. So obviously it's definitely a big challenge for all of us, and you can understand that how it is definitely going to uh, impact us in a very it's impacting us all in a very bad way. So obviously you can look into it, and obviously I'll try and explain what are the problems that are there. And even I am trying to discuss Delhi as a case study also for air pollution. So that is what I'll be talking today before I move to the next topic. So if you talk about various sort of pollutants, you can understand that these are some of the source pollutants, and these are and their sources and their effects. So for example, if you look at the first one, it is basically sulfur compounds. You can see that oxides of sulfur and hydrogen sulfide, and they are some prominent air pollutants. Like you can understand that what is the source of these pollutant. Obviously biological decomposition, because living organisms have a lot of sulfur. You can understand it's an integral part of our body. Even in our body we have a lot of sulfur. So then when you when you see decomposition, or even if you burn these organic matter, it will obviously release oxides of sulfur. Then if you burn fossil fuel which has sulfur, like coal, you can understand it will release a lot of sulfur oxides in the atmosphere. And then smelting of sulfide ores, you can understand that a lot of ores are there. We are trying to extract elements from its source. So obviously there are a lot of ores in that nature, which are uh, these ores, while you are extracting that element, will release these pollutants in the atmosphere. So you can understand that part, and obviously it leads to a lot of problem. So that is why we are discussing it. You know that the major problem that oxides of sulfur cause for us is acid rain. You might have heard this particular word. सभी ने सुना होगा acid rain क्या होता है? What exactly it is? You know that uh, it basically has a huge impact, because when you oxides and sulfur mix with the moisture that is there in the atmosphere, it comes down in the form of it becomes acidic, and it comes down like that. And obviously it will contaminate the soil, and also will contaminate the water bodies and all of those things. And it can directly harm the plants which are exposed to it. You can understand, like for example, it can cause harm to the living tissues of the plant. It will affect the productivity of the plant. It will also affect the yield of the plant. So all of these problems will happen. Soil acidification agar ho jayega, to plant ki growth mein bhi there will be a problem. You can understand. So it is all understandable that these oxides of sulfur are
very harmful because it is linked to acid rain. And even humans के लिए it has big impact. You can see it can lead to paralysis of lungs. It basically lowers our immunity. We become more vulnerable to diseases. For example, abhi COVID-19 chal raha hai. You can understand that even in COVID, you know that this term immunity was very important. So if you are exposed to pollutants like oxides of sulfur and hydrogen sulfide, you know that it affects our immunity as well. So we become more vulnerable to diseases, and any disease which affects you when your immunity is low will obviously impact you. So this will always obviously impact you more. So you can understand that part. So even influenza, pneumonia, and all of those things, they can affect us. So you can understand. And you know that acid rain is also damaging for the buildings and the materials, and it can lead to corrosion of all of these things because acid will react to all of these things and it will damage. इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपको पता ही है, ताजमहल जो बहुत ही फेमस एग्जांपल है। ताजमहल का कलर येलो हो रहा था बिकॉज ऑफ द रिफाइनरीज दैट वर अराउंड ताज एंड आगरा मथुरा में जो के आसपास जो रिफाइनरीज थे उसके जो एमिशन हो रहे थे, वी कैन सी दैट ऑल ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स वर अफेक्टिंग। एंड बाद में एक्शंस लिए गए, यू नो दैट वी आर ट्राइंग टू रिस्टोर द मॉन्यूमेंट बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। सो it was getting impacted by acid rain. So it's a very famous example from India. This particular process को हम stone leprosy भी बोलते हैं। अगर पत्थर की कोई भी चीज जो monuments जो बने होते हैं अगर वो डैमेज हो रहे होते हैं एसिड रेन से, तो उसको हम उस phenomena को stone leprosy बोला जाता है, right? So anyways, the next pollutant that I highlight is carbon monoxide. Carbon monoxide prominent air pollutant, right? Because, and you know that there is only one important source of it, which is affecting, its majority of production comes from that. That is the incomplete combustion of fossil fuel, and mostly it happens in automobiles, right? So incomplete combustion, you can understand that if something is being undergoing combustion, and if there is less availability of air, so it doesn't form carbon dioxide, it forms carbon monoxide. Obviously when air availability is more, when oxygen availability is good, then obviously it will form carbon dioxide, right? So that is what happens. And here I'm just referring to the fact that it is forming carbon monoxide because if you look at vehicular emission, we have controlled combustion happening inside vehicles, right? So obviously वहाँ पे air availability ज़्यादा है नहीं, तो it will form carbon monoxide. So definitely that will happen. So when you are burning fuel inside the car, it is going to produce carbon monoxide. और आपको देखना है तो कभी आपने किसी ने गाड़ी रखा होगा तो एक PUC सर्टिफिकेट होता है, उस पे देखिएगा जब डेटा आता है आपके व्हीकल का, तो उस पे लिखा हुआ स्पेसिफिकली आपकी गाड़ी से कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन कितना है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंटली यू कैन इजीली सी दैट ऑन योर pollution certificate because it's a thing that we always check when we are going for pollution checkup for the vehicles, चाहे बाइक हो चाहे कार हो. अगर that PUC certificate सब बहुत mandatory है, तो you can understand that, you can check that and उसमें पता चल ही जाएगा आपको कि what exactly is the requirement, and उस पे standard लिखा हुआ है कि इतना emission हो रहा है आपके vehicle से, सारा data आपको मिल जाएगा उसमें से कि आपकी गाड़ी से कितना emission हो रहा है अगर आपने ढंग से कराया है. It has a huge impact on plants because it is affecting plants and it interferes with a lot of metabolic pathways of plants. So you can understand that it affects the plants negatively because if you talk about leguminous plant, उनमें nitrogen fixation होता है, वो it inhibits that, then it premature aging होता है plants में. इसके वजह से it also affects the cellular respiration that happens in the plants, and also it affects the initiation of roots in the plant. So many impacts are there on the plant. These are some of them. And if you look at humans, you know that for us, it's a very poisonous gas. It can directly kill people. I mean, I'll explain how, but you can understand that it kills people. And because it decreases our oxygen carrying capacity, it also affects our nervous system. So I'll explain how it affects our oxygen carrying capacity. So ये समझना बहुत जरूरी है. जैसे अगर आपको पता होगा कि जब आप सांस लेते हैं तो बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन से बाइंड होता है, एंड इट गोज टू द टिश्यू, राइट. एंड वहां पे जब टिश्यू पे पहुंचता है तो वहां पे ऑक्सीजन रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पिक होता है हीमोग्लोबिन द्वारा, एंड वो वापस लंग्स में आ जाता है, राइट. एंड देयर इट गेट्स रिलीज्ड आउट, राइट. सो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अनस्टेबल कंपाउंड बनाते हैं ताकि वो आराम से टूट सके.
तो जब लंग के पास हेमोग्लोबिन जाता है तो ऑक्सीजन उससे जुड़ता है और टिश्यू पे जाता है तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड पिक होता है वापस जब लंग्स आता है ब्लड। तो ये आर्टरी और वेन से होता है ट्रांसपोर्टेशन। आपको पता होगा कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है हमारा रेस्पिरेशन का। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के आने से बॉडी में वो हेमोग्लोबिन के साथ एक स्टेबल कंपाउंड बना देता है, राइट। उस स्टेबल कंपाउंड का नाम है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन क्या है? स्टेबल कंपाउंड है। अगर आप ज्यादा डोज कार्बन मोनोऑक्साइड का आपके बॉडी में चला गया तो क्या होता है कि सारा हेमोग्लोबिन जो बॉडी में है वो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बन जाता है। दैट मीन्स उसके बाद आप ब्रेथलेसनेस की वजह से आपका डेथ हो जाता है। तो इट इज ए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। लाइक इतनी जल्दी तुरंत डेथ नहीं होता, बट क्या होता है कि अगर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर है, कुछ घंटे तक आप लगातार कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं अपने बॉडी में, तो क्या होगा कि सारा हीमोग्लोबिन आपके बॉडी में जो होता है वो दैट बाइंड्स विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। एंड कोई भी फ्री hemoglobin will not be available, and that is where the problem is, that if there is no free hemoglobin you can anybody can die because of breathlessness, like you can understand. Obviously it's a poisonous gas. It doesn't uh, you know it can kill people. So whoever gets exposed to it for a long time, that is what it does. So obviously you can understand that why it is a big problem, right? So we should not be inhaling it directly, and long exposure to carbon monoxide can cause a lot of problems. So then there is carbon dioxide. उसका भी एक ही सोर्स है, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है, एंड वही सबसे बड़ा सोर्स है। उसी के वजह से सारा प्रॉब्लम हो रहा है। बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड that is a very important gas, but it is a greenhouse gas. So that is a big problem. That right now we are dealing with a very big global problem that is called as climate change, right? उसके वजह से काफी प्रॉब्लम हो रहा है, एंड हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज अगले यूनिट में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज आपका एक टॉपिक है सेपरेट। बट आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है। क्यों हो रहा है? बट अगर आप हिस्टोरिकल लेवल देखें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब 1900 जब 18वीं सदी के एंड में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, तो उसके पहले तक जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल था हमारे एटमॉस्फेयर में, इट वाज 280 पार्ट्स पर मिलियन। दैट 280 पार्ट्स पर मिलियन जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल था, आज की डेट में 417-18 पार्ट्स पर मिलियन पहुंच गया है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इट हैज इंक्रीज बाय अराउंड ऑलमोस्ट 50%। 280 पार्ट्स पर मिलियन जो एवरेज लेवल था हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का, वो बढ़ के हो गया है 417-18। अभी उससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ये जो 280 पार्ट्स पर मिलियन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट गैस, बिकॉज वो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को मदद करता है। दैट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस ऑल्सो। एंड ग्रीन हाउस गैस हमें चाहिए भी, बिकॉज अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं रहेगा तो प्लेनेट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये सब चीजें हमें चाहिए थी। अभी भी बहुत जरूरी है ग्रीन हाउस गैस का प्रेजेंस रहना प्लेनेट पे, ताकि हमारा अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहे, ज्यादा ठंडा ना हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली अभी क्या हो रहा है, अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ग्रीन हाउस गैस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है 1.5 से 2 डिग्री के बीच में कुछ इंक्रीज हो गया है। तो उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। वी कैन सी दैट द प्लैनेट इज अ लिटिल मोर हैज लॉस्ट इट्स स्टेबिलिटी। एंड क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है वी विल एनीवेज डिस्कस इन द नेक्स्ट यूनिट। सो अभी तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बट यू कैन अंडरस्टैंड दैट ये 80% जो प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग का, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही हो रहा है। देन देर इज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जिसको नॉक्स भी बोला जाता है। मेनी जनरेटर्स और व्हीकल्स, अगेन फॉरेस्ट फायर से भी आता है, बिकॉज पता होगा नाइट्रोजन प्लांट में न्यूट्रिएंट है। अभी फर्टिलाइजर की बात करें, आपको पता है नाइट्रोजन एज फर्टिलाइजर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। एंड व्हाट इट डज इज दैट प्लांट में चूंकि नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, तो फॉरेस्ट फायर भी बहुत सारा आजकल कॉमन हो गया है। जैसे आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर या अमेजोन फॉरेस्ट फायर, इनमें बहुत ज्यादा टन का नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज हुए थे एटमॉस्फेयर में। सो it's a big problem. That nitrogen oxides are also having similar impact like sulfur oxides. It also causes acid rain. So obviously आपको पता होगा कि प्लांट का ग्रोथ, लीफ का टिश्यू डैमेज, प्लांट का प्रोडक्टिविटी, प्लांट का यील्ड, एवरीथिंग विल गेट इम्पैक्टेड।
So very similar problems are there, which is similar to oxides of sulfur, and nitric acid is even more powerful acid. इतना तो समझ में आता ही होगा, पता ही होगा. So obviously it will damage the tissues of the plants. It will cause soil acidification, water bodies, acidification of water bodies. So it will have a huge long-term impact on the area where acid rain is happening because of these gases. So ये तो बहुत major problem है. So that is what you need to understand. And if you talk about humans, you know that it can damage our layer of mucus inside the brain, inside our respiratory system. So आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में नेजल जो पोर्स नोज में नोस्ट्रिल्स हैं, दैट इज कनेक्टेड टू लंग्स वाया अ विंड पाइप जहाँ पे म्यूकस का लेयर रहता है. सो it can damage that particular layer. It can cause irritation in our nose. It can cause breathing discomfort, and it also creates a medical problem called as pulmonary edema, which is edema का मतलब होता है रिटेंशन ऑफ वाटर इन लंग्स. तो ये लंग्स में पानी भरने वाला जो मेडिकल प्रॉब्लम है वो इस पोल्यूटेंट से भी रिलेटेड है. यू कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट. एंड एक्सट्रीम केस में इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से आपको पता है डेथ भी हो जाता है. सो ऑब्वियसली नाइट्रोजन ऑक्साइड इज ऑल्सो a poisonous gas. It can harm us in a very bad way. So that is something that you need to keep in mind. Then uske alawa hydrocarbons, they are another form of pollutant that you can see on the screen. The sources of hydrocarbons are again from vehicles, from industries, from different types of refineries and all of those things. And obviously it affects the plant, it affects the growth of the plant, right? And in humans, it also causes nasal irritation because it irritates the mucus layer that is there inside our nasal respiratory tract. And it is also something which can trigger cancer. You know that it is a carcinogenic substance. Hydrocarbon are carcinogenic. If you are exposed to it on a regular basis, it can also trigger cancer because it is carcinogenic in nature. And one more important point, you know that methane is also a hydrocarbon, which is also a greenhouse gas. So, and one of the most potent ones. So even after carbon dioxide, methane is the second bigger problem when you talk about global warming and climate change. So you can understand that definitely we can see the problem, right? So it can affect us in a very negative way, and hydrocarbons are also harmful for us if it goes inside our body. But the last one that you see is one of the biggest problems, particulate matter, right? Particulate matter is the biggest challenge. Why? Because obviously you can understand that what I'm trying to point out here, that even when you talk about Delhi's problem, you know that अगर बाकी form of pollutant अगर आप देखें, तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं है सिटी पे जितना particulate matter का है. हमारा दिल्ली का एयर पोल्यूशन लेवल हमेशा हाई इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा particulate matter है. और ये जो मैंने लिखा हुआ है सोर्स और इफेक्ट, उस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए. बट इसके अलावा आपको ये सोचना होगा कि किसी भी प्रोसेस से अगर डस्ट रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, जो हम कर रहे हैं, जो भी हरकतें हम कर रहे हैं, सो दैट विल पुट पर्टिकुलेट मैटर इन द सो बिकॉज क्या होता है, पर्टिकुलेट मैटर हमारे में मोस्टली हम दो टाइप के पर्टिकुलेट मैटर लिस्ट करते हैं. फर्स्ट इज PM10, राइट, जिसमें पार्टिकल का साइज 10 माइक्रोन आसपास होता है. Then there is PM 2.5, which is very small. 2.5 micron होता है particle size. So it is so small that it can easily directly be absorbed by your lungs, and it can enter your body directly from the air itself. So obviously it will be very harmful for us. तो अभी जैसे मैंने बोला ना, कोई भी प्रोसेस, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत डस्ट उड़ रहा होता है, आपको पता होगा कि एस्बेस्टॉस शीट जो है वो बहुत कंट्री में बैन हो चुकी है बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ पर्टिकुलेट मैटर. आपने गड्ढे खोदने शुरू कर दिए ग्राउंड में, कहीं पे घर पे मिट्टी, वो भी डस्ट रिलीज करता है. आपने कारपेंटर को बुलाया और लकड़ी कटवाने लगे, 100 डस्ट उड़ेगा. अगर मेटल का पैनल आपने घर में लगा रहे हो तो मेटल काटने वाले को बुलाया तो वो मेटल का डस्ट उड़ाएगा एटमॉस्फेयर में. तो एनी प्रोसेस, जैसे क्लासरूम में कॉलेज जाएंगे तो लोग चौक से लिखते हैं, तो चौक से वो भी डस्ट निकलता है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू से देयर आर मल्टीपल प्रोसेस दैट इज एंड अगेन किस तरह का डस्ट है एटमॉस्फेयर में उतना ही उसका हार्म है. तो तरह तरह के पार्टिकुलेट मैटर होते हैं एटमॉस्फेयर में. इवन आपको पता होगा कि जब वो आपने सुना होगा दिल्ली का मेजर प्रॉब्लम होता है जब नवंबर के महीने में और अप्रैल के महीने में जब जो फार्मर्स हैं वो क्रॉप स्टबल जलाते हैं, तो बहुत ज्यादा ऐश भी उड़ता है एटमॉस्फेयर में उसके वजह से. सो ऑल ऑफ दीज जो
जलने के बाद जो राख होता है दैट आल्सो बिकम्स पार्टिकुलेट मैटर एंड फ्लाइज इन द एटमॉस्फेयर, तो उसके वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ऑब्वियसली प्लांट में पूरा लीफ के ऊपर एक लेयर बन जाता है, तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इम्पैक्ट करता है प्लांट्स का, जब डस्ट का लेयर बन जाता है। आपने देखा होगा कि अगर बारिश बहुत दिन नहीं होती है तो सारे प्लांट के ऊपर एक डस्ट का लेयर जमा हो जाता है, और हरे के बदले आपको प्लांट थोड़ा सफेद सा दिखना शुरू हो जाता है। तो इट इज अगेन ए प्रॉब्लम फॉर प्लांट्स बिकॉज वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हैम्पर करता है प्लांट्स का, सो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। एंड अगर आप अपने बॉडी में देखें, ह्यूमंस के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखें, तो आपको पता होगा कि जितने भी फंक्शन है हमारे बॉडी में, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, उनमें हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। रीनल सिस्टम में किडनी खराब हो सकती है, लेड अगर चला जाए तो यू कैन नो दैट लेड कॉजेज इनफर्टिलिटी इन मेल्स, यू नो दैट, एंड ऑल्सो इट कैन कॉज अबॉर्शन इन प्रेग्नेंट फीमेल्स। अगर आप एस्बेस्टॉस शीट के नीचे कोई रहता है तो उसके लंग्स में प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज एस्बेस्टोस इज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। फ्लोराइड से दांत खराब हो सकता है, राइट? So you can understand all of these problems are there which is associated with particulate matter. Again, depends on what sort of particulate matter is going inside your body. वहाँ पे उसी हिसाब से आपका प्रॉब्लम होगा. So that is what happens. So these are all the major air pollutants, and this is what it does for us, and it is very harmful for our body. And obviously that is why we keep talking about air pollution on, because obviously we can't avoid it. Obviously आप कितना भी कोशिश कर लें, आपको सांस तो लेना है, and you will be exposed to these pollutants if these are very high. Particulate matter is one of the reason why Delhi is very polluted. मैं अपना फोन खोल के चेक कर रहा हूँ डेटा, जो आप रियल टाइम डेटा देख सकते हैं आज के डेट में अपने फोन पे ऑल टाइम। जैसे अभी मैं एयर पोल्यूशन का डेटा अगर देखूं दिल्ली का, तो अभी मेरे को दिखा रहा है 235। अभी मैं बताऊंगा क्या होगा ये। सो बिफोर वी, ये देखो आप, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स का मैप है जिसमें आप देख सकते हैं कि किसको अच्छा माना जाता है, किसको खराब माना जाता है। अब देखते हैं, 0 से 50 को गुड बोलते हैं, जो हमारे शहर में शायद ही कभी होता है। कभी बहुत बारिश होती है तो उसके बाद एयर क्वालिटी इंप्रूव हो जाता है शहर में। 51 से 100 मॉडरेट, ये भी हम कभी नहीं पहुंचते दिल्ली में। 101 से 150 अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स, 151 से 200 अनहेल्दी, 201 से 300 वेरी अनहेल्दी, एंड 300 से ऊपर जो भी होता है वो हजार्डस। अभी 300 से 500 लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता होगा कि दिल्ली में एक बार 1700 भी क्रॉस कर चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स, 1700। तो कई बार एक्चुअली क्रॉस किया हुआ है। 2016 में नवंबर में रिकॉर्ड हाई लेवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर था हमारे सिटी में। तो ऑब्वियसली 300 के ऊपर ही आप देख रहे हो हजार्डस है, अभी 235 है, तो आप समझ ही सकते हो कि 235 कम्स अंडर सीवियर कैटेगरी और वेरी अनहेल्दी बोल सकते हो। सो दैट इज व्हाट इट इज देयर। सो इट्स स्टिल अगेन, अभी कितना भी अच्छा हो जाए तो 200 इज टेक्निकली गुड, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम पे आप देखोगे दिल्ली 300, 350, 400 मोस्टली ऐसे ही रहता है, all of these levels of particulate matter, so you can understand that part. So I'm just trying to make you understand that why problem it is rated as one of the most polluted cities in ambient air quality, right? That is why. I mean, if we just discuss the reason why Delhi is one of the most polluted city in ambient air quality, आपको देखना पड़ेगा कि सिटी में हो क्या रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो दिल्ली का है वो पार्टिकुलेट मैटर है, राइट? बाकी जो भी गैस आपने देखा पोल्यूटेंट्स का, वो उतना ज्यादा हाई नहीं है दिल्ली में। इट इज ऑलवेज विद इन द लिमिट्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बट पार्टिकुलेट मैटर लेवल्स आर ऑलवेज वेरी हाई, एंड दैट इज द रीजन जो दिल्ली का हालत इतना खराब है। कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होता है दिल्ली में। उसके बाद आपने देखा होगा कि दिल्ली में 1.1 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल है। तो और ऑब्वियसली पॉपुलेशन आपको पता है कि 2.5 करोड़ से ज्यादा है, और एक 1.1 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल है, तो आप समझ ही सकते हो उससे कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑब्वियसली इतना ज़्यादा। उसके अलावा 2 थर्मल पावर प्लांट्स हैं दिल्ली के बॉर्डर के पास, जो एक ITO के पास है, दूसरा बदरपुर बॉर्डर के पास है, जहाँ से हमारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आता है, जहाँ पे कोयला जल के बिजली का प्रोडक्शन होता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इट इज़ ऑब्वियसली विल लीड टू एयर पोल्यूशन। उसके अलावा जो सबसे प्रॉब्लमेटिक महीना होता है दिल्ली का, वो नवंबर और अप्रैल का। अभी मैं बता ही रहा था, जब खेती होने के बाद, जब हार्वेस्ट होने के बाद क्रॉप स्टबल बर्निंग होता है, राइट? यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि ये जो करके महीना जो जलाते हैं क्रॉप्स, उससे भी प्रॉब्लम होता है। सो क्रॉप स्टबल बर्निंग इज ऑल्सो सोर्स ऑफ प्रॉब्लम इन द सिटी।
तो उसके व्हीकल्स हैं या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, या फिर अभी आपको पता होगा कि इवन कंस्ट्रक्शन साइट को आप देखेंगे तो जो हमारा एयर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस हैं वो भी फॉलो नहीं होता. So that is what you can understand. So these guidelines and protocols are not followed. So you can understand that part. So इसीलिए उसकी वजह से और होता है जैसे कि पूरा कवर करके रखना है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बैरिकेड लगा के रखना है कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास. आप देखेंगे बहुत जगह पे ये सब चीजें जो बेसिक नॉर्म्स है वो भी फॉलो नहीं होता. तो ऑब्वियसली पोल्यूशन का लेवल हाई होगा. उसके अलावा आप जब देखते होंगे जब कि दिल्ली में पोल्यूशन हाई होता है तो बहुत सारे गाइडलाइंस आ जाते हैं. जैसे कुछ यूनिट्स पावर प्लांट्स के बंद कर दिए जाते हैं, डीजल जनरेटर्स का ऑपरेशन बंद हो जाता है, लोग कंस्ट्रक्शन साइट को रोक दिया जाता है, उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया. देखोगे स्टेट गवर्नमेंट का गाइडलाइन आता है. आपने दिल्ली में देखा होगा कि एक्सपेरिमेंटल तौर पे जो स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली का था, एक 2016 में जब मैंने बताया था सबसे ज्यादा पोल्यूशन था दिल्ली में, जब 1700 वगैरह भी क्रॉस किया हुआ था, उस समय ऑड इवन रूल का भी पॉलिसी आया था, जो 2 बार आया था. एक 2017 अप्रैल आई थिंक, और 2016 नवंबर में ऐसे करके आया था, जनवरी और अप्रैल में आया था. तो 2 बार हमने देखा ये आया था. एग्जैक्ट डेट्स तो भी नहीं है याद ध्यान में मेरे, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि वो डबल टाइम पे 1 महीने के लिए 14-14 दिन 2 हफ्ते के लिए ये ऑड इवन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुआ था हमारे सिटी में. तो उस दौरान भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिलैक्सेशन थे. इट वाज नॉट इन फुल फोर्स की कुछ गाइडलाइंस में था कि आप अगर सोलो चला रहे हैं, लेडीज हैं, सोलो ड्राइवर हैं, उनको अलाउड था. और स्कूल के में बच्चों को लेके जाना है तो उसमें अलाउड था. तो बहुत सारी चीज़ उसमें रिलैक्स था. उसमें से सिर्फ 20-25% गाड़ियां ही टेक्निकली रोड से निकली थी उसकी वजह से, बट मोस्टली गाड़ी तो फिर भी रन कर ही रहा था उस टाइम पे भी. तो काफी रिलैक्स रूल आया था. बट अगेन वो वही एयर पोल्यूशन को, और आपने ये भी देखा होगा कि दिल्ली में वो रोड के साइड में वो टैंकर लेके पानी में फेंकना शुरू करता है ताकि डस्ट सेटल हो जाए. तो मल्टीपल एक्शन प्लान्स हैं जो उसके बाद आप यू नो देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ बेसिक स्टेप्स लिया जाता है. एक सबसे इम्पोर्टेंट जो दिल्ली के आसपास हुआ था जिसकी वजह से पोल्यूशन में हमारे शहर में काफी कमी आई, दैट पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बना, राइट. दिल्ली के चारों तरफ अभी देखोगे वेस्टर्न और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बना है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मेजर ट्रैफिक हमारे दिल्ली में आता था बाहर से, जिसका जो दिल्ली में जिनको काम नहीं होता, तो दिल्ली सिर्फ क्रॉस करके दूसरे अगल बगल के स्टेट में जाने के लिए एंट्री करते थे, तो उनको क्या हो गया, डायरेक्टली बाहर से डाइवर्ट होने का मौका मिला. तो काफी नंबर ऑफ व्हीकल्स हमने अपने सिटी में आने से रिड्यूस कर दिया उसके वजह से. तो अभी अगर आप देख सकते हैं कि दिल्ली के बाहर करीब एग्जैक्टली नहीं 100 किलोमीटर से भी ज्यादा का एक सर्कुलर रोड बना हुआ है जिसको पेरिफेरल एक्सप्रेस वे बोलते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न. तो उसको हम यूज करके काफी स्पीड से हम क्रॉस कर सकते हैं बिना दिल्ली में एंट्री किए. वी कैन गो टू आवर रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशन. So that is one of the important innovations that happened to reduce pollution in the city, and उसका कुछ इम्पैक्ट तो हुआ है. अभी भी दिल्ली में पोल्यूशन कम नहीं हुआ है बहुत उतना तो, लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंचता जो 2016 में पहुंचा था, वो 1700 वाला. 1000 अभी भी क्रॉस कर जाता है कभी कभी कुछ महीनों में. जैसे नवंबर का महीना मैंने बताया था, अप्रैल का महीना भी 500-600 क्रॉस कर गया था पिछले महीने. नवंबर के महीने में भी 1000 प्लस हो ही जाता है. आपको पता है कि क्रॉप स्टेबल बर्न के साथ साथ उस समय हमारा फेस्टिवल भी रहता है, दिवाली वगैरह भी होती है. तो चाहे कितना भी बैन लग जाए, बट पीपल स्टिल आर इनटू बर्स्टिंग क्रैकर्स एंड ऑल्सो, उससे पोल्यूशन होता ही है. So that is also one of the things that we should look. So you can, I hope it is clear to all of you. So obviously these are all the sources, and if you understand that thing properly कि how can we, तो मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये तो बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल है. आप दिल्ली में रहते हैं, आपको देख ही रहा होगा कि क्या प्रॉब्लम है. एयर पोल्यूशन इज हाई है, अगर आप आसपास सिर्फ देखना शुरू करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों ये हाई है. इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग. अगर रह रहे हो कहीं पे जहाँ पे पोल्यूशन है तो आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए बेसिक प्रॉब्लम क्या है हमारे शहर में जिसकी वजह से हो रहा है. तो मैंने वही सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की है. ये गाइडलाइन प्रोटोकॉल जो भी चीज होती है तो आपको हमेशा न्यूज़पेपर में आता रहता है, छपता रहता है, कि क्या अभी एक्शन लिया जाना चाहिए एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, राइट. अभी मैंने 235 बताया, ये काफी ठीक है. वैसे तो टेक्निकली देखा जाए तो ये भी एनएलडी के कैटेगरी में आ रहा है, वेरी अनहेल्दी, बट दिल्ली के हिसाब से ये फिर भी ठीक है क्योंकि दिल्ली में इससे बहुत ज्यादा रहता है हमेशा एयर क्वालिटी इंडेक्स, राइट. इट्स वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड. लास्ट टाइम इसका 11वां स्थान था वर्ल्ड वाइड. तो ऑब्वियसली बाकी जो टॉप 10 है वो सारे इंडिया में ही है. दिल्ली से भी खराब खराब शहर है. आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में कानपुर है, इलाहाबाद है, गोरखपुर है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, नोएडा है. ये सारे बहुत पोल्यूटेड हैं. कभी कभी गाजियाबाद का लेवल तो नंबर 1 तक पहुंच जाता है. कानपुर का भी नंबर 1 हो चुका है कई बार.
फिर आसपास में गुड़गांव है, फरीदाबाद है, मानेसर है, चंडीगढ़ है, जयपुर है, ग्वालियर है, पटना है, कोलकाता है। सो ये सब एग्जाम्पल ऑफ द सिटीज हैं जो भी बहुत ज्यादा है एयर पोल्यूशन। इनमें से ही ऊपर नीचे होता रहता है, किसी को पोजीशन मिलता है, कभी किसी को, जैसे कानपुर कभी कई बार नंबर 1 पोजीशन ले लेता है, कभी गुड़गांव ले लेता है, कभी गाजियाबाद ले लेता है, कभी पटना के भी हमेशा टॉप 5 में रहता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड, इलाहाबाद भी रहता है टॉप 5 में। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये मोस्टली नॉर्थ इंडिया में जो सिटीज हैं इसमें एयर पोल्यूशन का एक मेजर प्रॉब्लम है। दिल्ली हमेशा फिर भी नंबर 1 नहीं है। यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारा कंपैरिजन सिर्फ हमारे शहरों से ही है, बिकॉज जो मैंने बताया ना 20 जो सबसे खराब शहर है वर्ल्ड में पोल्यूशन के लिहाज से, उसमें 17 तो इंडिया के ही हैं। तो ऑब्वियसली ये सारे नॉर्थ इंडिया में ही है मोस्टली। मोस्टली क्या नॉर्थ इंडिया में ही है। साउथ इंडिया में चूंकि कोस्टल एरिया है, वहाँ पे विंड मूवमेंट काफी चल रहा होता है, तो पोल्यूटेंट्स हमेशा डिस्पर्स हो जाता है, तो वहाँ पे वी डोंट सी दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम एट दैट स्केल। So, obviously air quality index is not that bad in South compared to North India. So, these are all the examples that you can keep in mind. And control क्या है air pollution का? Obviously, that is why we are discussing. And ये paper का purpose ही आपको awareness लाना. So the whole purpose of this paper is for you to become aware about the problems. And since obviously when you become aware, you might think and take actions जिससे कम हो सके problem. So obviously, as a citizen, you should understand that India is a country where we see a lot of problems related to pollution, and we should also be cooperative so that we don't become a contributor to the problem. I hope you understand. So that is a very important point that you should understand. That we at any point of time we should not be someone who create problems for the creating problem for the air quality index. And as a person, we can always do a lot of things. Obviously, we should avoid using low grade fuel. Like for example, आपको पता होना चाहिए कि डीजल जो गाड़ियां हैं वो पेट्रोल गाड़ियों से भी खराब है, राइट? कोई पुरानी डीजल गाड़ी का इंजन का डिटोरिएशन भी बहुत फास्ट होता है। आपको पता होगा डीजल गाड़ी को परमिट भी 10 साल का ही मिलता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि डीजल एज अ वेरी लो ग्रेड फ्यूल, ज्यादा पोल्यूशन होता है। अगर नई गाड़ी भी डीजल की लोगी तो नई में ही वो 5-10 गुना ज्यादा, और पुराने होने के बाद 10-15 गुना ज्यादा पेट्रोल से पोल्यूशन करता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इट्स अ वेरी, एंड प्लस डीजल को आप सीएनजी में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, सीएनजी में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हो डीजल को, राइट? यू कैन अंडरस्टैंड। एंड पेट्रोल को आराम से सीएनजी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, जो रिलेटिवली बेटर फ्यूल है, राइट? यू कैन अंडरस्टैंड। एंड उसके बाद जो गैस निकल रहा होता है इंडस्ट्रीज या गाड़ियों से, कन्वर्टर से ट्रीट करके वी कैन मेक इट लेस हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। इंजन की सर्विसिंग लगातार करानी चाहिए ताकि एमिशन कम हो सके और कम से कम मिनिमाइज हो सके यूसेज, राइट? यू कैन अंडरस्टैंड दैट यूसेज गाड़ियों की कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। और अभी तो प्रॉब्लम है, पैंडेमिक चल रहा है, बट पहले हम कार पूलिंग की भी बात करते रहते थे कि अगर हम शेयर कर सकते हैं अपना व्हीकल तो इट कैन हेल्प अस, राइट? एंड ऑब्वियसली पेड़ पौधे लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? डेवलप फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्टेड एरियाज। दिल्ली के साथ एक एडवांटेज है कि हमारे पास काफी अच्छा फॉरेस्ट कवर है। अभी भी 14% एरिया दिल्ली का फॉरेस्ट कवर में है, एंड हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। और अगर चाहें ढंग से, वी टेक नेसेसरी एक्शन, वी शुड डेवलप ग्रीन बेल्ट मोर एंड मोर around the city. So that is something that we should have in mind. So that can help. Air quality index पेड़ से काफी मदद मिलता है, to solve air quality. So I hope you understood that how we can control and how Delhi has a problem and all of those things. I try to cover maximum points that is there linked with the pollution all part, and then we discuss Delhi as case study. And moving on to the next one, that is water pollution. अगेन यू कैन अंडरस्टैंड कि वाटर पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे एयर पोल्यूशन इज द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक वन, आपको पता होगा वाटर पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे करीब सारे पोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम को अगर आप देखें तो लगभग 500,000 people die because of water pollution. So you can understand that कि air pollution से 2 million and water pollution से 500,000, so करीब 2.5 million लोग, 25 लाख लोग एयर पोल्यूशन रिलेटेड टू एयर एंड वाटर की वजह से उनका सालाना हर साल डेथ होता है। they are all both slow killers, like you can understand that part. And उसमें सबसे prominently our contamination of fresh water which is around us. That fresh water resources are also disturbed by human activities.
which is what we consume, and we will start with the first one, that is fresh water. And you can see ki how it impacts us, freshwater pollution, and what are the causes for these pollution. So let's see. We have multiple sources of problem in the water bodies, right? And what are these sources? So you can see that पहले तो नेचुरल या मैनमेड रीजन से भी कभी जब ऑर्गेनिक मैटर पानी में चला जाता है तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में बढ़ सकता है पानी का, बिकॉज उसका बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होगा पानी में, एंड ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया। अगर पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा उसके वजह से, तो जो ऑर्गेनिज्म उसमें रहते हैं दे विल डाई, राइट। ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पानी में अगर मछलियों को जिंदा रहना है तो उसमें कम से कम मिनिमम 4 मिलीग्राम पर लीटर ऑक्सीजन चाहिए होता है। अगर उससे कम हो जाएगा ऑक्सीजन का लेवल तो मछलियां मरनी शुरू हो जाएंगी। तो ऑर्गेनिक मैटर डंप करने से क्या होता है, यही सेम प्रॉब्लम होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिक चीज अगर आप डालेंगे तो उसको जो बैक्टीरिया वो तो सड़ाने की कोशिश करेगा ही, कंज्यूम करने की कोशिश करेगा ही। तो जब बैक्टीरिया कंज्यूम करने की कोशिश करेगा उसको, तो उस दौरान वो ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा जो डिजॉल्व है पानी के अंदर, तो उसका डायरेक्ट कंपटीशन हो जाएगा एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के साथ, एंड दे विल डिप्लीट द ऑक्सीजन लेवल इन द वाटर बॉडीज। एंड उसके बाद यू कैन सी कि मछलियों में मरे हुए दिखेंगे आपको उस वाटर बॉडीज में। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज अ बिगर प्रॉब्लम, राइट। तो ये तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना बहुत जरूरी है कि इट्स अ बिग प्रॉब्लम, राइट। ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर बढ़ता है तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा पानी में, उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हो सकती है एक्वाटिक इकोसिस्टम में, राइट। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट। उसके डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म मर सकते हैं अंदर, राइट। उसके अलावा जो सब, ये तो खैर ऑर्गेनिक मैटर वाला सोर्स है, बट आपको पता होना जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की डेट में जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इज सीवेज। आपको पता होगा कि दिल्ली से यमुना बहती है और जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है हमारे सिटी का, वो सिर्फ 30 to 35% वाटर ही ट्रीट कर पाता है, तो बाकी डायरेक्टली डंप हो जाती है यमुना रिवर में। तो आपको पता ही है यमुना की हालत तो आप देखा ही होगा। सो अगेन हमारे शहर में ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, वी कैन सी गुड एग्जांपल्स फ्रॉम आवर सिटी ओनली फॉर पोल्यूशन एज वेल, वाटर पोल्यूशन आल्सो। यमुना इज द वन ऑफ द डर्टीएस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। So direct dumping of sewage from the household is a problem. Then industries is effluents. तो जो टर्म है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो हाउस होल्ड से निकलता है उसको हम सीवेज बोलते हैं, जो इंडस्ट्री से निकलता है उसको हम एफ्लुएंट बोलते हैं, राइट। सो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, एंड देन देयर इज डोमेस्टिक क्या कहते हैं, सीवेज। सो दैट इज, दीज आर बोथ मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। एंड हाउस होल्ड से जो सीवेज निकलता है आपको पता है उसमें कॉम्पोजिशन क्या हो सकता है। जो भी हम चीज पानी यूज करते हैं और वो नाले में जाता है, सो ऑल ऑफ दीज विल हैव लॉट ऑफ थिंग्स जो भी हम घर में यूज करते हैं, लाइक डिटर्जेंट हो, सर्फ हो, इवन जो टॉयलेट वाला वाटर हो। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल इवेंचुअली एंड अप इन दैट पर्टिकुलर ड्रेनेज सिस्टम, और वो वहाँ चला जाता है बिना, अगर ट्रीट नहीं हुआ ठीक से तो अनट्रीटेड ही पहुंच जाता है रिवर में। और इंडस्ट्रीज में वो हैवी कॉन्टामिनेंट्स होंगे, मेटल वाले, हैवी मेटल कॉन्टामिनेंट्स, ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स वुड बी देयर, राइट, विच विल अफेक्ट द वाटर। एंड उसमें काफी टॉक्सिक केमिकल्स हो सकते हैं जिससे वजह से काफी हार्म हो सकता है रिवर वाटर को। बट ऑब्वियसली जो बड़ा सोर्स है वो हाउस होल्ड सीवेज ही है, बिकॉज दैट इज वन बिग सोर्स, बिकॉज एवरीबडी रिलीजेस दैट वाटर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड जो इंडिया में है, और इवन जो दिल्ली में है वो यमुना के लिए डालते हैं, जो भी यमुना के किनारे सिटीज हैं। और मोस्टली आपको पता हो यमुना का पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण भी दिल्ली ही है। अगर स्टैटिस्टिकल डेटा के हिसाब से जाएं तो 80% जो पोल्यूशन हो रहा है रिवर यमुना में, उसका सोर्स दिल्ली ही है। एंड यमुना एक ऐसी नदी है जो 1000 किलोमीटर से ज्यादा बड़ी है, राइट। एंड उसमें दिल्ली में वो सिर्फ 32 किलोमीटर है, एंड इन दैट 32 किलोमीटर्स यू गेट 80% ऑफ द पोल्यूशन इन द रिवर। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि रिवर वाटर कैसे हम इम्पैक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर एक्टिविटीज। एग्रीकल्चरल वेस्ट का क्या मतलब है, जो हम पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं एक्सेसिव, राइट। आप जब को पता होगा पानी में हम पेस्टिसाइड और वो डालते हैं, क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर। तो वो क्या होगा, एग्रीकल्चरल फील्ड में डालने के बाद जब बारिश होगी तो पानी में मिल जाएगा, और उसके बाद वो रिवर सिस्टम में चला जाएगा या वाटर बॉडीज में चला जाएगा जो लेक्स और पॉन्ड्स हैं, एंड इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम देयर, राइट। तो वो दिखेंगे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। एंड उसका डायरेक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज आपको पता होगा, लोगों का जो वाटर बॉडीज के आसपास एक्टिविटी होता है, जैसे कपड़े धोना पानी में, या फिर
washing clothes in the water bodies, and you know उसके अलावा पानी में नहाने के लिए चले जाते हैं, कभी जानवरों को भी नहलाते हैं पानी में. So you can understand all of these will also lead to problems in the water system. That is direct human activities, and then we are also referring to something which we call as modern customs, right? And tradition. So what is this modern custom? मैंने मॉडर्न वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा ट्रेडिशनल कस्टम कुछ और था, राइट? अगर आप मूर्ति विसर्जन की भी बात करें पानी में, तो पता होगा कि पहले जो मूर्तियां बनती थी वो क्ले की बनती थी, उस पे ऑर्गेनिक पेंट होता था, उस पे कॉटन के कपड़े होते थे. और अभी जो मूर्तियां बनती है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है, उस पे केमिकल पेंट होता है, उस पे सिंथेटिक कपड़े होते हैं. सो ऑल ऑफ दिस विल पोल्यूट द वाटर बॉडीज, राइट? यू कैन अंडरस्टैंड. सो दैट इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज ये सारी चीजें जो है पिछले 20-30 साल में हमने चेंज कर दिया अपने सिस्टम को. पहले हम जो मूर्तियां बनाते थे वो काफी इको फ्रेंडली हुआ करता था, एंड वो पानी में आराम से डिजोल्व हो जाता था, पानी कॉन्टेमिनेट भी नहीं होता था. बट अब जो हम मूर्ति बनाते हैं उसका बिल्कुल भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है. यू कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट. इट क्रिएट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, राइट? And what you can understand in that this is that it can, you know, yes. So I was just trying to explain that the modern religious customs हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया है, जो हमने excessive plaster of Paris यूज करके मूर्तियां बनाना शुरू किए और केमिकल पेंट अप्लाई करके, तो उससे प्रॉब्लम हो रहा है. सो दैट इज व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड हियर इन मॉडर्न कस्टम्स व्हिच कैन लीड टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द वाटर. What are the effects? Effects, you can see it can damage our body in a very negative way. Like it can cause various diseases related to, you know, nervous system में प्रॉब्लम हो सकता है. हमारे जो हेवी मेटल्स है उससे हमारे इंटरनल ऑर्गन में प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे किडनी या लिवर में प्रॉब्लम हो सकता है, इवन ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? यू कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट. व्हेन इफ इट एंटर्स आवर बॉडी इट कैन लीड टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम. मैंने अभी बताया ही था थोड़ी देर पहले कि 2.5 मिलियन लोग वाटर और एयर पोल्यूशन की वजह से मरते हैं, इसमें 2 मिलियन एयर के वजह से और 0.5 मिलियन वाटर की वजह से. दैट मीन्स these two pollution are the major killers. जैसे मैंने बताया था 2.6 2.7 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड बाय पोल्यूशन, जिसमें 2.5 मिलियन इज जस्ट बाय air and water pollution alone. So it is a big problem. So that is what you can understand. You know, it is one of the thing that we should keep in mind. And then there is a problem called as eutrophication. अभी ये पिक्चर जो मैंने पहले दिखाया था, यू कैन अंडरस्टैंड, ये हरा ऐसा वाटर बॉडी दिख रहा है, ये यूट्रोफिकेशन का नतीजा है. यूट्रोफिकेशन क्या होता है? इट इज बेसिकली रिलेटेड टू न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट. अगर आपने प्लांट पानी में किसी भी तरह से फर्टिलाइजर का मात्रा बढ़ गया, तो उससे क्या होता है? ये एल्गल ब्लूम होता है. एल्गे जो पानी में, इसका ग्रोथ बहुत तेज हो जाता है, रैपिड, बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ होने की वजह से पानी का पूरा कवर जो ऊपर का होता है दैट इज बिकम्स ग्रीन, राइट? कंप्लीटली पानी के ऊपर एक लेयर बन जाता है ग्रीन कलर का. दैट मीन्स अगर आप कोई भी वाटर बॉडी देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो वाटर बॉडी है ये impacted है because of fertilizer pollution. So you can understand that. एंड दी एल्गे का लेयर बनने से क्या होगा कि पूरा का पूरा लाइट पेनिट्रेशन ब्लॉक हो जाता है वाटर बॉडी का अंदर. जो जितने एक्वाटिक प्लांट्स हैं उनका डेथ हो जाता है तुरंत, बिकॉज प्लांट्स को चाहिए सनलाइट. अगर पानी के ऊपर आपने एक लेयर बना दिया हरा रंग का, तो आपको पता होगा जो अंदर के प्लांट्स हैं उनको तो सनलाइट मिलेगा ही नहीं. दे गेट इम्पैक्टेड बाय इट. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इट बिकम्स अ प्रॉब्लम एंड बिकम्स अ बिग चैलेंज फॉर द एक्वाटिक इकोसिस्टम. पूरी तरह हो जाता है. उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम कब आता है? जब ये एल्गे का भी डेथ हो जाता है. एल्गे का भी लाइफ साइकिल होता है, एक स्टेज के बाद एल्गे मरना शुरू हो जाता है, राइट? तो उसमें क्या होता है? ये एल्गे जब मरता है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इट कैन बी, इट इज अगेन इंक्रीजिंग ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर बॉडी. जो मैंने पहले समझाया था, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने से क्या होगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा, बीओडी बढ़ जाएगा. तो क्या होगा उसके बाद? व्हेन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीजेस, यू कैन अंडरस्टैंड कि इट इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स फ्रॉम. जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली एक्वाटिक सिस्टम में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, राइट? So that is where the problem comes from. So eutrophication is a big problem, right? That is what you can understand. And किसी भी हरे वाटर बॉडी को आप देखेंगे, अगर आप चलते फिरते जाते हुए इधर उधर, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये बिल्कुल भी एक प्रॉब्लम से ग्रसित है. दिस फर्टिलाइजर का मात्रा उस पानी में ज्यादा है, उसकी वजह से एल्गल ब्लूम हो रहा है.
एंड इफ यू डोंट टेक एक्शंस टू सॉर्ट दैट पर्टिकुलर वाटर बॉडी आउट, वहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनको डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए वो मर सकते हैं उसकी वजह से. So that is a big problem that we see all the time affecting the aquatic ecosystem in our country. ये तो हर जगह, it's a very common encounter. So that is what you can understand here in this situation. Anyways, so ये तो है ही. उसके अलावा हेवी मेटल टॉक्सिसिटी से भी प्लांट का ग्रोथ हैम्पर होता है. एंड कभी कभी आपको देखेंगे सेडिमेंट की वजह से प्लांट में जो है टर्बिडिटी, वाटर में टर्बिडिटी हो जाता है, उसकी वजह से भी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी रुक जाती है प्लांट्स की. बिकॉज पानी के ऊपर ज्यादा सेडिमेंट है तो लाइट पेनिट्रेशन उससे भी रुकता है, तो वो भी एक्वाटिक प्लांट को डैमेज कर सकता है. आपने देखा होगा कि टर्बिडिटी भी चले जाते हैं कभी कभी सेडिमेंट जाने में, लॉट ऑफ सेडिमेंट इफ इट गोज इन द वाटर बॉडी. और हमारे ऊपर जो हेल्थ इंपैक्ट होता है, एनिमल्स के ऊपर भी सिमिलर हेल्थ इंपैक्ट्स. दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस पे इम्पैक्ट होता है, कोई भी चीज का इम्पैक्ट प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स के भी ऊपर भी होता है. दे ऑल्सो गेट डैमेज, face problems in their health. They also face disorder in their body because of these contaminants. So obviously you should understand that aspect as well. How can we control water pollution? So you can understand that obviously public awareness is a very important thing. As I said, किसी भी pollution को sort out, किसी भी pollution related problem को sort out करने के लिए public awareness is a must. We should first realize the problem and take necessary actions. अपने level पे जो भी कर सकते हैं we should do it. पानी में कुछ भी डालने से पहले उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए. जैसा अभी मैंने बताया कि एसटीपी की कमी है हमारे सिटी में, जिसकी वजह से हम we face all the time the problem. So we should treat the waste properly before it gets dumped in the water. We should avoid dumping any kind of non-biodegradable or biodegradable waste in the water body. So you can understand that part. Avoid direct human activities like bathing or washing clothes in the water body. So ये एक बहुत बड़ा problem है. You can understand कि ये directly harm करता है water body का. पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर ज्यादा इस्तेमाल ना करें, ऐसा शिक्षा देना चाहिए हमें फार्मर्स को, जिनको समझाना चाहिए कि इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है. और कभी कभी हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को लेकर के वाटर पोल्यूशन का सॉल्व कर सकते हैं. उसको बायो रिमीडिएशन बोलते हैं. कभी कभी बैक्टीरिया वगैरह हमारे लिए हेल्पफुल होता है टू ट्रीट वाटर, मतलब टू क्लीन द वाटर सिस्टम. सो वी कैन यूज द टेक्निक्स लाइक फॉर बायो रिमीडिएशन. जैसे बायो रिमीडिएशन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फाइटो रिमीडिएशन. जब हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म प्लांट्स को लेके काम करते हैं, आपको पता होगा प्लांट के आसपास दो पौधे उगते हैं जिसको टाइफा एग्जांपल है, और फ्रैगमाइटिस सरकंडा, देख सुना ही होगा ये पौधे, देखा होगा ये पौधे पानी के आसपास उगते हैं. एंड ये क्या करता है, हैवी मेटल कंटामिनेंट पानी से आराम से रिमूव कर सकता है. टाइफा भी हम यूज करते हैं बहुत लार्ज स्केल में टू क्लीन वाटर, ट्रीट वाटर बायोलॉजिकली. सो दीज आर एग्जांपल्स दैट कैन हेल्प अस सॉल्व द वाटर पोल्यूशन. अगर हम अच्छे से मैनेज करें, वी विल बी एबल टू सॉल्व इट, provided we are taking necessary actions to solve this problem. कुछ एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा बिफोर वी स्टॉप. लाइक वापी एक शहर है गुजरात में. आपको पता होगा गुजरात इज एन इंडस्ट्रियल स्टेट where there is a very high amount of pollution, one of the most polluted state in the country. तो वापी के बारे में बताया था, एक बार रिपोर्ट आई थी, तो वहाँ पे मरकरी लेवल जो पानी में है वो 96 गुना ज्यादा है. आपको पता है मरकरी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है हमारे हेल्थ को. सो इट्स अ हैवी मेटल एंड if it is there in the water system, it is very dangerous for us. High level of mercury is a big problem for all of us. We should definitely understand this problem and take necessary actions to prevent mercury pollution in that particular area. यमुना के बारे में आपको बताया है कि we need more sewage treatment plants. We need industries to follow the guidelines and protocol. Effluent treatment plants हमें बना के रखने चाहिए, and it's a very important thing. अगर नहीं होगा ETP हमारे पास तो रिवर तो पोल्यूट होता ही रहेगा. सो बाकी जो भी चीजें हम करते हैं रिवर में, जो ऑर्गेनिक मैटर डंप करते हैं या फिर जो हम पूजा या वगैरह करते हैं, उसके जो वेस्ट होते हैं या फिर जो मूर्तियां हैं वो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. अब हम सस्ते के चक्कर में प्लास्टर ऑफ पेरिस और केमिकल पेंट वाली मूर्तियां अगर पानी में डालेंगे, अगर हमें वर्शिप ही करना है तो एटलीस्ट हम अच्छे क्वालिटी के मटेरियल यूज करके मूर्तियां बना सकते हैं. बिकॉज वर्शिप करना तो है ही, ऑब्वियसली वी विल फॉलो द ट्रेडिशन, बट अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेडिशनल मूर्तियां हैं वही हमें यूज करनी चाहिए. बिकॉज इको फ्रेंडली मूर्तियां हम बनाते थे पहले, और आज की डेट में क्या बनाते हैं, मैंने बताया प्लास्टर ऑफ पेरिस और केमिकल पेंट और कॉटन क्लोथ्स के बदले सिंथेटिक क्लोथ्स पहनाते हैं मूर्तियों को. तो उससे मूर्ति सस्ती तो हो जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो एनवायरनमेंट के लिए काफी डेंजरस है. वाटर क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब करती है, राइट, एंड प्लस डिजोल्व भी नहीं करती है. तो इसका मतलब है कि भगवान के लिए भी ये डिसरेस्पेक्ट हुआ टेक्निकली स्पीकिंग.
और नॉर्मली आप जब डालते हैं मूर्ति तो आपके हिसाब से वो डिजोल्व हो जानी चाहिए पानी में, राइट। आप देखेंगे कि अभी आप मूर्तियां वो सालों भर वैसी पड़ी रहती है, और अगले कुछ साल के बाद भी जाएंगे तो आपको फिर मिल जाएगी। सो इट इज अ वेरी bad situation for the water system. So obviously you can understand ki, why all of these should be stopped, and we should definitely follow our tradition, but it should be follow the way it was. तो tradition हमारा जो था वो पानी में क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक आइडल ही डालने के था, राइट। ऑर्गेनिक आइडल, ऑर्गेनिक पेंट, कॉटन के कपड़े। सो वी शुड फॉलो एंड गो बैक टू दैट एंड मेक द आवर थिंग्स बेटर अगेन। सो दैट इज व्हाट, पिछले कुछ दशक में बहुत ज्यादा चेंज आ गया है हमारे सिस्टम में। So that is what happens. So right, you can understand. So this is a big problem that we are dealing with. So obviously, I believe that you understood air and freshwater pollution. So anyways, I mean, you can always ask questions, and if you have any questions, you can even ask in the next class, because अगले 2 दिन भी हम pollution वाला ही topics discuss करेंगे. I think yeah, I'm always open to questions. If you are able to write anything in the chat box, you can let me know. Okay, fine. हाँ जी सर, हाँ जी सर। हाँ, मैंने अभी जस्ट खत्म किया क्लास, तो आप ऑफलाइन कर सकते हैं, लाइक लाइव क्लास बंद कर सकते थैंक यू सर। हैं। थैंक यू।